ना 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 ना, ब्रेक पॉइंट तो सेट है ऑलरेडी, आप लिस्ट टेस्ट करके देख लो। हाँ हाँ सेट कर दो अब एक बार ब्रेक पॉइंट। मुझे लगता है वो ऑलरेडी सेट ही होगा, आप एक बार बस प्रोसेस कंटिन्यू कर दो। वो रुका ही हुआ है नहीं, प्रोसेस। वो टाइम लगता है उसे। टाइम लगता है। ऐप बड़ी है ना। हाँ लगने दो, लेकिन वो रुक जाएगा ब्रेक पॉइंट पे आकर। नहीं, हो गया, आ गया। UI V कंट्रोलर यू डिड लोड पे हो गया। बिल्कुल। अभी प्रोसेस स्टेप आउट। हाँ आप एक काम करो, हाँ एक मिनट होल्ड कर रहे हैं आप। हाँ मैं आपको ना वो दे रहा हूँ, म्यूटेड लोड के बाद से हम करते हैं ना, उस पे जाने से पहले एक सेकंड होल्ड कर। वेरिएबल टाइप के नॉट लिस्टिंग। फ्रेम वेरिएबल में कोई याद नहीं रहा वेरिएबल अभी। फ्रेम इन्फो देखिए एक बार, जस्ट गो टू फ्रेम इन्फो। हाँ ठीक है, व्यू डिड लोड के ऊपर ही, फ्रेम के ऊपर है ना हम, ठीक है। अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, हम व्यू डिड लोड के अंदर हैं तो मतलब देखो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले तो हमें एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है प्रॉपरली, ठीक है ना, कौन से क्या कंट्रोल बने हुए हैं, और फिर हमें उनको करना है डीबगिंग। ओके। ओके सेल्फ वेरिएबल जब हम करते हैं, एक सेकंड में होल्ड करना ना, करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक सेकंड होल्ड। हाँ जी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, कनेक्ट कर लूँ ना अभी फोन एक बार, स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। ओके सर। Now, so suppose what we did, we have set a breakpoint at view did load. Okay. Now, once we reached here, we have seen thread backtrace. When we did thread backtrace, it has shown that we have stopped at login page view controller on view did load. Okay. यस You also run it, thread backtrace. डन। Just share your. Okay, do one thing. I am
giving you an AnyDesk link. You do have AnyDesk, right? Yes. So give me your AnyDesk ID. So will have both the screens shared, yours also and mine also. Okay, sir. One 7 7. चैट पर दे रहा हूँ सर. Please share. Acha, ID you have already given. Okay, cool. It's saying the desk is not available. Pratik, can you see what's coming in on my Yeah. machine? Yeah, client offline. Okay. Please, ऑफलाइन कैसे हो गया? please check if you have given the correct desk. सॉरी सॉरी, एक मिनट. ये रहा मेरा, मैंने मेरे फ्रेंड का दे दिया. सॉरी. Accepted. Okay. Sorry. Just need to configure it on an appropriate screen. Scratch. Cool. Pratik, you need to open your phone also, right? एक मिनट. Is it visible now? Just 1 second. Just hide what's unwanted. Okay, so you are watching my screen. Yes. So just keep it, just adjust it a little on one side. Otherwise, you will see your screen repeatedly. Oh. So anyways, so what do we have here is I've got my phone connected and my current breakpoint I have set at view did load. Okay. So we might be here. Once we land up to view did load, if we check the current frame info, okay, just type frame info.
Same. Frame number 0. So what have you got? You have got a UI kit core, UI view controller, view did load is connected. Okay. We are at Yes. frame 0. Frame 0, I've got a memory address. I've got a name. Let's say my UI login page view controller has a view did load. Okay. And then it is pointing out to a variable also, that is the self variable. Okay. So what you need to do, just you resume the process, because there might be some n number of breakpoint set. So either you do one thing, breakpoint list, you do breakpoint list. We do need to check the 471 breakpoints which are set. Just go to the top, because we want the correct view did load from the application proper name, So now you can see that we have got SF privacy tracker detail view controller, adaptive preview, contact autofill, password saving view controller, SF privacy report, password table view controller, view did load. Okay. Go a little more down. You can see that there are so many view did load functions. Then we have for the AV music app behavior, AV player, AV home. Then you have UI documentation, UI alert controller, view controller. Go a little more down. What we need to do is we need to find out the view did load from that class. I think card IO view, it was the name, right? Card Yes. IO. Just search for that. Card IO, command F, card IO. नहीं है. Card IO should be up caps. Just search for card. Or maybe search for up. Maybe search for the card. Search a little more. CN Stark setting. Go a little more. Go more. We are searching for card IO view controller. Go more. I think I just got back, right? How many are identified? वो नहीं दिखा रहा है इसमें कार्ड का कितने का. Either search for uphold then. See if there is anything with the name uphold. Because you can see we have got it for contacts UI, we have got it for pencil kit. We are looking for the uphold one. We don't have anything with respect to uphold, right? Yeah. मैं वापस से हॉपर में एक बार देख लूं. नहीं, आप एक काम कीजिए. आप बस आप एक काम करो, फ्रेम इन्फो ओपन करना एक बार फिर से. सर प्रोसेस कंटिन्यू करके एक बार करें. नहीं, फायदा नहीं है ना. 471 लोकेशंस है, हमें अप्रोप्रिएट वाले फ्रेम पे पहुंचना है. ये तो यूआई व्यू कंट्रोलर नॉर्मल वाला है, ठीक है ना.
प्रोसेस कंटिन्यू करके पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा वाला है, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लिस्ट में जितनी भी 471 की लिस्ट आ रही है, ठीक है। फ्रेम इन्फो आपने किया, आपका ये आ गया। अच्छा, सो आप एक बार चेक कीजिए फ्रेम वेरिएबल। फ्रेम वेरिएबल मैंने सर्च किया, देखिए we should get an output somewhat like this. You see my screen, frame variable. एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कुछ हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ है, आप जूम पे देखिए। अरे हाँ zoom कर, हाँ फ्रेम वेरिएबल, let me do it। नहीं आ रहा वेरिएबल। जूम पे क्लिक कीजिए ना। हाँ हाँ, मैं आपने जो कमांड यहाँ पर फायर किया ना फ्रेम वेरिएबल, हम्म। मैंने भी वही किया, बट इट्स नॉट लिस्टिंग एनीथिंग। It's not listing anything ना, because we don't have access to the correct class at the moment. We have to get into the correct कंट्रोलर, जहाँ पे हमें सेल्फ कंट्रोलर मिलेगा, ठीक हाँ है। सो चलो आप प्रोसेस कंटिन्यू करो, प्रोसेस कंटिन्यू करना, एंड फिर से फ्रेम वेरिएबल कॉल करना, बिकॉज वी डू नीड टू गेट frame variable, and keep the phone open also, so that we'll be able to see. Yeah, go on. हम्म, Which one was this? This was UI view controller view did load. Continue again. एक मिनट है सर। Process. No, 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 no. Process continue. अब ये आ गया, Frame variable. कर्नल में चला गया। Go to the frame variable. प्रोसेस इंटरप्ट करके भी मैंने देखा। Process तो resume हो गया। बाकी व्यू कंट्रोलर्स जो लोकेशन हमारी सेट हुए ना, हाँ उसके ऊपर लगना चाहिए था। आप एक काम करो, आप ऐसा लिखो, ब्रेक पॉइंट सेट, सेट -f -f, f ओके, for हाँ, हाँ card IO view controller. You just check the correct spelling from the hopper first. Card is a class, would always be starting from uppercase.
डॉट स्विफ्ट करना। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी। आप एक काम करो, अब आप एक बार ना, एक बार प्रोसेस रनिंग करो, प्रोसेस कंटिन्यू करो। ऐप दिखाना साथ में। अब आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट करो, ब्रेक पॉइंट सेट हाइफन हाइफन नेम, व्यू डिड लोड, करना एंटर। ठीक है, अब ब्रेक पॉइंट लिस्ट करना और उसमें कार्ड आईओ व्यू देखना कि कार्ड आईओ व्यू आ रहा है क्या। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर नहीं आया ना। नहीं आया। व्यू डिड लोड ना, क्योंकि किसी दूसरी क्लास के आ रहे हैं, ये वाले आने चाहिए ना जो हमारे वाले हैं। यस। देखो मेरी स्क्रीन पे देखोगे आप एक बार ना, तो आई हैव सेट ब्रेक पॉइंट ऑन व्यू डिड लोड। I've got around 152 लोकेशन सेट। ओके, मैंने ब्रेक पॉइंट लिस्ट किया, ये है मेरा व्यू डिड लोड, जो मेरा ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने 152 लोकेशंस के ऊपर। ओके, सो एट 2.1 ये लगा हुआ है प्रतीक लॉगिन ऐप के ऊपर, लॉगिन पेज व्यू कंट्रोलर व्यू डिड लोड के अंदर। ठीक है, एट दिस एड्रेस। फिर उसके बाद में एट ऑब्जेक्टिव सी के भी व्यू डिड लोड के ऊपर लगा हुआ है। फिर डॉक्यूमेंट मैनेजर आ गया, यूआई किट कोर आ गया। ठीक है, यूआई अलर्ट कंट्रोलर व्यू डिड लोड, यूआई किट कोर का आ गया। ये सब इंटरनल क्लासेस हैं, यूआई किट कोर, यूआई डिबगिंग इंफॉर्मेशन, यूआई किट कोर, शेयर शीट, है ना, मैप किट, देन कॉन्टैक्ट्स यूआई। आपके में आई थिंक कॉन्टैक्ट्स यूआई वगैरह आ रहा है। आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट्स यूआई आ गया। जितनी और अदर ब्रेक पॉइंट्स हैं, ऑन बोर्डिंग किट आ गया। ठीक है, सो बस आपके में कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर नहीं आया ना। नहीं आया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आप इसको ऐसा सेट करो, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट सेट, प्रोसेस प्रोसेस इंटरप्ट करूं। ब्रेक पॉइंट सेट हाइफन हाइफन एफ, सॉरी हाइफन एफ कर दो बस। किया। कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर, कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट :32। ठीक है। ठीक है, एक बार सेट ये देखो। कॉलन 30, ये कॉलन लाइन, 32 कहाँ से मिला सर? लाइन नंबर है, लाइन नंबर। ऐसे ही एक अप्रोक्सीमेट लाइन नंबर सेट कर रहे थे। इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफन ऑप्शंस हाइफन कोड। फाइल कर दो, हाइफन हाइफन फाइल कर दो। इनवैलिड कॉम्बिनेशन। ब्रेक पॉइंट सेट,
ये वाला करना है, ब्रेक पॉइंट सेट हाइफन हाइफन फाइल फाइल नेम हाइफन एल लाइन नंबर, ऐसा कर दो, अपडेट कर दो। ब्रेक पॉइंट सेट हाइफन हाइफन फाइल, हम्म फाइल का नाम आ जाएगा कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट। हम्म ठीक है, इसको कोलन 32 हटा के हाइफन एल एंड लाइन नंबर 32 लिख दो, हाइफन एल 32। नो लोकेशन एबल ब्रेक टू पॉइंट। रिजॉल्व, कोई बात नहीं, और सर्च करते हैं। आप स्टार्ट करो 1 से, चलो 2 3 4। प्रोसेस इंटरप्ट नहीं करना है ना सर? नहीं नहीं, अभी नहीं करना है, हम सर्च कर रहे हैं ना कि कहाँ पे है। 4 5 6 7 10 तक कर दो चलो। कार्ड आईओ व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट करना, एंटर करना। अ, 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 यार आप एक काम करो, ब्रेक पॉइंट तो चलो हमारे सेट हैं, है ना। हम्म, अब आप एक बार इसको प्रोसेस को दोबारा अटैच करो, आप खोल दो। ठीक है। अब उस वाले से करना कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है ना, ये डब्ल्यू से करें। तो डब्ल्यू से अगर करते हैं, वैसे हम्म। पता है यार, एक काम हम ये कर सकते हैं। सर ए से करके देखें अटैच। अटैच से तो ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन बात है कि ब्रेक पॉइंट लिस्ट में आना चाहिए ना। ब्रेक पॉइंट मतलब फ्रेम ऐसा मिलना चाहिए जिसका फ्रेम इंफॉर्मेशन हमें दिख रही हो, समझ रहे हो। क्योंकि फ्रेम इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे मान लीजिए ब्रेक पॉइंट लिस्ट में मिल गया कि हमारा ब्रेक पॉइंट व्यू डिड लोड करेक्ट वाले एप्लीकेशन के व्यू डिड लोड के ऊपर है, ठीक है। ये अगर वो मिल गया तो बस फिर खेल खत्म, क्योंकि फिर ब्रेक पॉइंट मिल गया तो बस फिर तो मतलब फ्रेम वेरिएबल देखा हमने और उसको अप्लाई कर दिया, मतलब। क्योंकि परसों है ना सर, हम लोगों को बाद में दो फ्रेम मिली थी, फ्रेम नंबर 1 और उसके नीचे फिर फ्रेम नंबर 0, और फिर शायद से हमने स्टेप आउट किया था, नहीं फिर वो वो बात ठीक एप्लीकेशन है, बट लोड। वो बात ठीक है, लेकिन फ्रेम वेरिएबल चाहिए ना हमें। आप इसको एग्जिट करो एक बार, दोबारा से अटैच करो एप्लीकेशन में। अभी तो कोई थ्रेड ही नहीं है ना, अभी तो फ्रेम पे हो ही नहीं आता। तो अभी यहाँ पर डब्ल्यू करूँ या ए करूँ? दोबारा डिबग कीजिए। तो एग्जिट ही कर देता हूँ पूरा, फोन में भी एग्जिट करूँ पहले, तो शायद से वहां से प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, एग्जिट। अब मैं शुरू करता हूँ वापस से।
ब्रेक पॉइंट सब नहीं है। प्रोसेस कंटिन्यू करूं, क्या करूं सर? अब आप प्रोसेस देखो, हमें क्या चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ना ब्रेक पॉइंट सेट होना चाहिए। बात ये है, ठीक है। अब अगर हम लोकेशन डाल रहे हैं, नाम से व्यूडेड लोड डाल रहे हैं, है ना, ऐसे के बजाय अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक सेकंड होल्ड करना, इफ आई डू इट break point set hyphen login page view controller dot view get load. Yeah. क्या करूं, प्रोसेस कंटिन्यू करूं? है, एक सेकंड रुको, हाँ, ये हुआ ना सही, मतलब एक मिनट। देखो, I did it in this way. ठीक है, what do you do? I did it in this way. I said that with the view controller name and the function. ठीक है, ओके, try it once. ठीक है, एक मिनट। हाँ, Yeah. अब मैं कार्ड आईओ व्यू लेता हूँ सर। Yeah, take the card IO view. डॉट ये Dot किया ना आपने? यस, ये किया। एक हुआ, एक मिनट। नो लोकेशन, ब्रेक पॉइंट वंस अनेबल टू फोन का है, रिजॉल्व ब्रेक पॉइंट। फोन का है, फोन। इसको आप एक काम करो, एक बार प्रोसेस कंटिन्यू करो। अब प्रोसेस इंटरप्ट करके करूं? नहीं, अब आप सेट करो दोबारा, हाँ, ब्रेक पॉइंट। नो लोकेशंस। आई बिलीव द सिंबल टेबल नहीं अवेलेबल है ना रिलीज मोड की, तो उसको सिंबल्स मिल नहीं रहे हैं। अब करना एक बार। अच्छा, प्रोसेस इंटरप्ट करके फ्रेम चेक करना कौन सा चल रहा है। पहले फ्रेम इन्फो ले लो एक बार, रुको रुको रुको, एक बार फ्रेम इन्फो लेना। ठीक है, थ्रेड थ्रेड इन्फो लेना। प्रोसेस प्रोसेस इंटरप्ट। इंटरप्ट। लेना फ्रेम इन्फो और थ्रेड इन्फो। थ्रेड वन आया। फ्रेम वेरिएबल एक्सेस करना। फ्रेम वेरिएबल अभी भी एम्प्टी है ना? अब ये करे नहीं, व्हाट ब्रेक पॉइंट सेट एक बार। ब्रेक पॉइंट आप अभी प्रोसेस, हाँ चलिए कीजिए, सेट अप द ब्रेक पॉइंट वंस। नो लोकेशंस। नो लोकेशंस। Card IO view controller has no locations. Okay. 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 Chalo. So, we'll do one thing. So I think because the binary is stripped, right? So we do need to capture the symbol tables first.
we do need to collect them. Because of the symbol table, we are unable to access the name of the classes, you know. Okay. So what we'll do in our next session, we'll look into this. First, when we have done that demangling, we will be getting the symbol tables first. We'll extract the symbol tables initially, and then Okay. we are going to set up the breakpoints. So we'll be working out over the stripped binary stuff. The last one we did, you remember, Yes. the stripped binary section. So in the stripped binary, what was happening? We were removing all the symbol tables, so nothing was accessible. As in all the symbol names for the classes and functions, everything was out. So we will procure the symbol table first. Okay. We'll see what minimal information is available so as to set the appropriate breakpoint. Because currently the breakpoint which you are setting is on certain applications and on their view controllers, but they won't stop until and unless we continue, you know. And we will be able to get the variable only when we have the simple table extracted, or else what we can do is we can do it in that way where we can execute our PO based commands. So the one which I've shown you earlier, just I'm just giving you one example for the sake of completion. Just letting you know one thing. Just let me give me a minute. So I'll get Okay. back to my board. So what I'm doing is I'm sending one a PO command. I've shared one PO command with you. Okay, we'll do one thing. Okay, so we'll do one thing. We'll extract the symbol table first, okay, and then we'll see this variable extraction part. Once we get the variable, then what we will be able to do, I'll just give you one quick last information. Once you have got your frame info, okay, we do need to grab the symbol table first, because once we have that symbol table, once you will grab the frame information, you will get to have that did load function of the app with a self variable pointing to that. Then what we'll be able to do, we'll be able to print that self. Okay. So once we print that self, we get access to a memory location. And now self is something like this, which we have been doing earlier, where we can get the specific fields or the specific variables. Let's say from self, I want to extract the content of rectangle, one text field, let's say. Okay. So once I do that, I'm going to grab all that information of the particular controls, which we were doing earlier. So since Pratik login app is in a debugging mode, we do have the symbols available. Okay. But in the uphold case, I think we are missing the symbols. So since we're missing the symbol tables, we need to extract the symbol tables part first. Okay. And then we will get into extraction of the information from the frame. तो उसमें वो स्ट्रिप बाइनरी वाला पार्ट आ जाएगा शायद. Yeah. The continued part which we do need to do, this one I'll tell you. Okay. We have been doing this, right? Introduction to the stripped binaries, and now we do need to do that with IDA initially and Rabin2 to grab the symbol table part first, and then we will get into memory object manipulations and everything.
Okay. Okay. So function Okay. hooking we did earlier. So what we can do is we can actually inject our tweak in order to set up a breakpoint, you know. So what we can do, Yes. let's say we can set up a tweak. I'll give you one idea. We'll set up one tweak, we'll call one function, and we will set a breakpoint for that particular function which we injected. So naturally the breakpoint will be set. You Okay. got my point? Yes. So we will tweak, we'll inject our function, we know our function. So we are going to stop it at that location. Okay. And then we will get to have the proper variables and all the returnable access to every, the self object and the internal objects to extract the data out of it. ठीक है. Okay. So we'll do that way. Let's do it in the next class because I have a meeting currently Yes. with Yes. interns. Okay. Yeah. Yeah. So No problem, sir. let's catch up in the next session. I'll just record. I'll just stop the